Am I visible now? Again, the same thing happened, but that's okay. You're audible Yeah. to me, and we both are visible to the audience. There is some glitch, I think. So I So, think we can continue with am I this. visible Yeah. to you? Yeah. You're totally visible. All the books behind you are also visible. So we can continue with it. Yeah. Okay. I don't know what's the problem, but Okay. anyway, we can start our session now. Yeah. Please. So I'm so much inspired by you. Like you have a story behind you. एक legacy मैं बोलूँगी कि है क्योंकि you sustained an injury, an ankle injury, but you didn't let that injury define your future, and you changed your you chose to be a civil servant then, and you started preparing for UPSC examination. So how was that phase, sir, when you got an injury? Because it was also a dream for you to become an army officer, और वो बन के and then फिर change करना, how difficult was that First of all, about being the army or being an army officer. phase of So your life? the okay. Am I audible to you? Yes, you are Okay. completely. First of all, about joining the army, as you mentioned, while I was in the college, the army came in for an interview. There was a university entry scheme at that time, university entry scheme in which the army came to the college, shortlisted a few individuals, and then based on that shortlisting, we were sent for the SSB, and I attended the SSB in 19 SSB Allahabad, which is presently Prayagraj, and from there I was selected. And as far as joining the military is concerned, yes, I have always been inspired by the ideals of this great country, that we are a part of the great India that we all proudly boast of. So the bottom line was always to serve the country in whatever way possible. So when just for your information, I was selected both for the army and the air force in different SSBs, Oh my. and so I had the option, but I chose the option of joining the army because army comparatively had a diverse experience when it comes to Mhm. being in the army. So I joined the army, and then after having undergone my training for military academy, Dehradun Indian Military Academy, I was commissioned into Corps of Signals, and then Mhm. subsequently the unit life started. All the things were going good, and I've been again, for your information, I've been an active sports person all my life. I've played Okay. a number of games. I've played a number of games, and the most important of them has been basketball. And I played basketball extensively even before joining the army and after joining the army also. Mhm. And subsequently, one of the training events after my first unit, the first unit, as you mentioned earlier, it was Tezpur in Assam. Yes. So Yes. once that unit, the tenure of that unit expired, I had to go for a mandatory young officers course, which happens in Mau in Madhya Pradesh. So it was Okay. during that course that I got injured again during one of the basketball games only. Mm-hmm. It at that point of time we were just about to finish with the course. So because the course was just about to get finished, I was advised by the instructors that since you have worked hard and done well in the course, there's no point going back to the unit without completion of the course. So I Mm-hmm. think that 1 month or 1.5 months after the injury, so that was a little bad because ideally I should have gone for immobilization and totally been in the resting phase, and Mm-hmm. that in a way aggravated my injury. So I think that was the issue which ultimately aggravated the injury, and over a period of next 2 years, it only got bad. Mm-hmm. And in addition to the ankle injury, also I had a disc issue also. So it was a collaborated effect of both the ankle and the disc injury that I Mm-hmm. subsequently decided that I may not be able to contribute that effectively in the army as I would want Mm-hmm. to, as I've learned to. So that is the moment in 2019 that I decided that I should now think of an alternate career with the Yes. civil services, in which, with the limitations of the injury that I had, I can still continue serving in the army, or serving for the country. Mm-hmm. So that's really incredible, sir. But it so much, was it difficult for you, or how you overcame that? Like you wanted to serve the nation anyhow. That was the point. Yes, yes, that was the point. And as far as the dejection or demotivation is concerned, let me tell you, the Indian military, when we are in the Indian Military Academy, it teaches you Mm-hmm. certain things, and those lessons, those learnings, I think contributed to the fact that I never felt demotivated.
because Okay. with certain processes that you undergo for the training, the events that you participated in, Mhm. it is liable that sometime or the other you might get injured, you might have certain setbacks. Setbacks are a part of life. So that is what the army and the training taught me, or teaches all of us, Mhm. that setbacks are just a part of the process, and we need to learn to move on despite everything. So Mhm. I think that is the learning that I derived from the military training, and in a way it helped me overcome the challenges in terms of the injury. And in fact, I never felt demotivated. It was always clear that the service of the country is the paramount importance. So I think the Aspirants demotivation part was who, never there. okay. Yeah. So there are a lot of SSB aspirants, and they really need such inspiration. So what is your suggestion to them? Because a lot of time they do not get selected easily. They are attempting over and over again. So what is your message to them, to the SSB aspirants? How should they prepare for the SSB, and how should they prepare themselves for the failures? Okay, so first of all, to all the SSB aspirants, the important thing is not to prepare for the SSB, but to prepare yourself for life, for the challenges that lie ahead of SSB. SSB is just a part of the process. What I think where children go wrong is that they try to compete with the other candidates in the SSB. SSB is Hmm. not a competition. As far as I have learned, and as far as my belief about the SSB is concerned, it is not a competition, it is not an examination, it is just a kind of mirror in which you are supposed to go and see yourself for the next 5 days if you're screened in. So if you take it in that spirit, that you are going to the SSB with an aim to know yourself in a better way and to understand what are your positives, what are your strengths, what are your weaknesses, I think that is more important rather than treating it as an examination or as something to compete with the other candidates who are there. And as far as the preparation for this particular thing is concerned, I think you have to evolve yourself over a period of time. Your overall personality, when it comes to overall personality, I think it is a preparation for that. It is a preparation for life, for the challenges that life will put you through. So Hmm. starting with this, right from the communication skills, right from the way you think, right from the way you do your routine activities in life, in your school life, in your college life. So that in itself is the preparation. So suppose if you are in school or in your college, so my advice would be to participate in as many activities as possible. Yes, it is important to focus upon the curriculum part, the studies that you have to do, but studies Okay. are just a very small portion of it. In addition to the studies, you have to Mhm. evolve yourself. So for that, I think you need to participate in every event that happens in school and college. May it be sports, may it be literary events, may it be cultural events. So that will give you the confidence and the energy to do well when it comes to the future challenges of life. So my advice is that just participate and try to have a better understanding of the events that happen around us. Be Mhm. a well-read man, be a educated, be an informed citizen of this great country. Once you are that and have the confidence to speak among the public, to speak with your subordinates, I think you are ready for the SSB, or for that matter, any challenge in life. Definitely. Yeah. So you served the nation, like you served in Tejpur, Assam. So is there any incident that still brings goosebumps to you? Like ऐसा कुछ incident हुआ जो अभी भी आपको याद है, and which is very inspiring. You still remember, that still brings smile on your face, or sometimes bring goosebumps as well. As I think lost the final part of the question. Can you just repeat the final part? yeah, I said, is there any incident that still brings like goosebumps जयपुर असम सो ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ सर जो आपको स्टिल आपको याद है which is fresh in your memories that still bring maybe smile on your face or bring goosebumps or you would like to share with all of us. Lot of incidents. Army is full of challenges, full of activities which will challenge your limits, and as well as keep you on your toes and make you learn the right lessons. Starting right from the academy or even in the units, there are a lot of things that happen. Not all of them I can share with you, but yes, Mhm. just to give you an example, that as I was in Corps of Signals,
So we used to undergo certain exercises in which we Okay. used to train for the what the exact situation would be if the war breaks out. So in that way, we had gone to a forward area in which the exercise was to be conducted. So in one of those events, because we were the ones, the signalers, if we talk in the military parlance, the signals and the engineers are the ones who go first up, because they are the ones who are supposed to get the communication ready before the other components of the army move in. So we moved in for the first day, and then by the next afternoon we had to get all the communication lines laid up, all the communication through. So it was like 48 hours of continuous working without sleep. And there were challenges because the terrain was mountainous, it was the winters, and we had to get the communication through, we had to get the logistics through. So all that process, 48 hours of sleepless time and working continuously without a break, and at the end of the day making sure that before the other components of the army came in, the communication was through and we were able to provide them the support that was required. That's so challenging, sir. So challenging. Yeah. So, sir, you also prepared for UPSC. How was that? How difficult was that? Because I have heard, like, I have not, I never tried it, but I've heard it is so difficult to get selected in UPSC. बहुत मुश्किल से किसी का सिलेक्शन होता है. तो सर, क्या जो भी अभी जो प्रिपेयर कर रहे हैं, whoever who are preparing for UPSC, how should they prepare themselves for this thing, for this examination? So, कुछ suggestions जो prepare कर रहे हैं UPSC या बाकी जो यूथ है उनके लिए सजेशन सर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो पहले आपने बात करी डिफिकल्टी की, तो उसका मैं आंसर देना चाहूंगा कि डिफिकल्टी इज इन द माइंड, डिफिकल्टी इज नॉट इन द प्रोसेस. डिफिकल्टी इज जस्ट अ मैटर ऑफ योर परसेप्शन. अ थिंग इन इटसेल्फ इज जस्ट अ थिंग. उसको आसान या उसको सरल या मुश्किल बनाना वो हमारे हाथ में है. तो जो डिफिकल्टी का कॉन्सेप्ट, आई थिंक इट इज मोर टू डू विद व्हाट पीपल हैव informed each other or people tell each other. But if you ask me, the process in itself is not difficult. It is the difficulty of maintaining that consistency and maintaining that discipline throughout the process that is difficult. If you ask me, the process is very simple. There are basic books to be read, there is a basic process to be followed, and you have to repeat the process over and over again. So that is a very simple process. It is not a difficult process. But difficulty comes because we assume or we take the process to be difficult, and instead of focusing upon what is required to be done, we say that the thing is difficult, we say that the process is difficult. So that is what the difficulty involves. A process in itself is not difficult. There is a set guideline or set things to be done. There are a set of events that are required to be done. If you have to prepare, you have to read the current affairs, you have to read the static part, you have to prepare for your optional subject. So the process is very simple. Yes, it is a time consuming process, and the difficulty that you say is, yes, a little bit of difficulty is because of the competition, but you cannot do anything about the competition. All your focus has to be on the process that is required. So my advice to the aspirants also is, I've been asked this question a lot of times, that what should we do? They are confused what is required to be done. I've been interacting with a lot of students, young students who are giving their first or second attempt. So they are actually a little bit under pressure because they do not know what is required to be done. And when you do not know what is required to be done, that makes the process difficult. So the first thing to be done is to inform yourself and know about the details of the process. What is required to be done at various stages. If you are preparing for this 2024 prelims, so first thing is, what is required for the prelims? What are the subjects that I need to read? What are the different, apart from the static, what are the sources for current affairs? And another difficulty which the students or the aspirants find is about finalizing the sources. They are confused about the sources कि कहाँ से क्या चीजें पढ़नी है. तो उस चीज को लेके भी मतलब सिंप्लिसिटी लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि सोर्सेज आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, बट आपको, जैसा मैं हर जगह कहता आया हूं, कि आपको सोर्सेज पे और अपने आप पे ट्रस्ट करना है. यदि आपने करंट अफेयर्स का कोई एक पर्टिकुलर सोर्स उठा लिया है, तो ट्रस्ट एंड हैव फेथ कि वही चीज आपको एग्जाम क्लियर करवाएगी. क्योंकि सीक्रेट इज नॉट इन द सोर्स, सीक्रेट इज हिडन इन द रेपिटेशन ऑफ द सेम सोर्स टाइम ओवर एंड ओवर अगेन. तो वो जो ट्रस्ट फैक्टर है, वो फेथ है कि आपको अपने आप पे भरोसा रखना है, प्लस आपको भरोसा रखना है कि जो सोर्स आपने चूज करा है एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए, आपको उस पर स्टिक करके उसको बार बार, जितनी ज्यादा बार आप रिवाइज करके उसको
प्रिपेयर कर पाए. सो दैट इज द सीक्रेट. डिफिकल्टी प्रोसेस में नहीं है, डिफिकल्टी हमारे माइंडसेट में है. मैं इसको आई विल जस्ट रीइटरेट दैट फॉर योर ऑडियंसेस. सर कुछ एस्पिरेंट्स थे, उन्होंने मुझे मैसेज भेजा. दे वांटेड टू आस्क यू कि उन्होंने बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स भी ज्वाइन किए हैं, किसी ने दो दो भी किए हैं. एंड वो Okay. पूछ रहे थे कि कोचिंग सेंटर्स हाउ फार दे हेल्प विल हेल्प अस. कि हमें खुद अपने सोर्सेज ढूंढने चाहिए पढ़ने के लिए, और वी शुड फॉलो द कोचिंग सेंटर्स. सो डू दे रियली हेल्प अस? तो वो भी उनका क्वेश्चन था. Okay, it's a very important question actually. If you ask me, though, I personally do not recommend coaching for the UPSC. हम्म. बिकॉज वन ऑफ द फर्स्ट कैजुअलिटी फॉर द कोचिंग के कारण क्या होता है, आपका अपना जो टाइम है, अपना टाइम फ्रेम है, आपके अपना जो एक डेली प्रोसेस आपको रिपीट करनी है कि सुबह से शाम तक आपको इतने घंटे पढ़ना है. तो कोचिंग के कारण सबसे ज्यादा और सबसे पहली जो आपकी दिक्कत है कि वो आपका टाइम प्लान डिरेल हो जाता है. क्योंकि यू आर रिक्वायर्ड, सपोज जैसे आप कह रहे हैं कि कुछ बच्चों ने दो दो कोचिंग्स भी ज्वाइन कर रखी है. तो यस. हाँ, हाँ. तो सबसे पहली चीज, अगर आपने एक भी कोचिंग ज्वाइन करी है तो उसमें यू माइट बी स्टडिंग 2 और 3 क्लासेस पर डे. तो 2 और ऑफ 3 कोर्स. क्लासेस वुड मीन एटलीस्ट 6 to 7 hours यू आर देयर. तो 6 to 7 hours जब आप कोचिंग में है, फिर आपको कम्यूटेशन के लिए आने जाने में वक्त लगेगा. तो 7-8 घंटे जब आपका प्रोडक्टिविटी अगर देखा जाए, अगर मैं आपको एज अ टीचर आपको बताऊं, तो क्या है कि जो हम एक क्लास में 2 घंटे में पढ़ेंगे, जो क्लास में हम पढ़ाई होती है, तो वो अगर आप पर्सनल लेवल पे पढ़ना चाहेंगे, वो शायद आप आधे घंटे में पढ़ लेंगे. क्योंकि क्लास में रिक्वायरमेंट्स है, हर बच्चे का लेवल अलग है, हर बच्चे के डाउट्स की अंडरस्टैंडिंग की कैपेसिटी डिफरेंट है, हर बच्चे का बैकग्राउंड डिफरेंट है. तो जो चीज क्लास में 2-3 घंटे में पढ़ाई जाएगी, वो आप अगर खुद मेहनत करेंगे तो शायद वो आधे घंटे में आप कवर कर लेंगे. तो ये एक चीज है. बट इसके बावजूद एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि देयर आर सर्टेन सब्जेक्ट्स जो टेक्निकल है नेचर में. तो उसके लिए यदि आपको किसी की गाइडेंस लेनी है तो दैट्स नॉट अ बैड आइडिया. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको एक क्वेश्चन ये नहीं है कि आपको कोचिंग लेनी है कि नहीं है. क्वेश्चन है कि आपको एग्जाम क्लियर करना है कि नहीं करना है. तो यदि आपको ओवरऑल जो आपका प्लान है उसमें कोचिंग एक सप्लीमेंट बन के काम आ रहा है कि आपके ओवरऑल एफर्ट को बूस्ट कर रहा है, तो देन देयर इज नो हार्म इन गोइंग फॉर द कोचिंग. बट यदि कोचिंग जाने के बाद आपको अपना पर्सनल स्टडी के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए वक्त ही नहीं बच रहा है, तो देन इट इज अ प्रॉब्लमैटिक थिंग. तो स्पेशली जो बच्चे अटेम्प्ट के पास है, सपोज जिन्होंने 2024 का प्रीलिम्स देना है, तो यदि आप वहां पे क्लियर करना चाहते हैं प्रीलिम्स को, तो अभी वक्त आ गया है कि आप सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस करें. तो कोचिंग हेल्पफुल है, बट अगर आप उसको ठीक तरीके से लेके चल पाए. बिल्कुल. So somebody has asked the question that how to increase mock scores. तो मॉक स्कोर्स का मतलब, आई विल टेल यू, आई इनफैक्ट मेड अ वीडियो ऑन दिस आल्सो. तो मॉक स्कोर का सबसे पहली चीज है कि हमें अंडरस्टैंड करना है कि सबसे पहले जो आपने डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, डैफ जिसको हम बोलते हैं, तो वो जो है वो एक ब्लूप्रिंट है इंटरव्यू बोर्ड के सामने कि वो आपको किस तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे. तो सबसे पहले जो डैफ में एक एक टर्म बच्चों ने डाल रखी है कि मेरी हॉबीज में ये चीजें हैं, मेरी इंटरेस्ट में ये चीजें हैं, तो वो एक एक चीज का पूरा डिटेल्ड नॉलेज और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होना चाहिए. सपोज मैं किसी पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करता हूं, मैंने इंजीनियरिंग करी है किसी और स्टेट से, ग्रेजुएशन किसी और स्टेट से, फिर तो उन स्टेट्स का हल्का हल्का इकोनॉमिक बैकग्राउंड, उनमें लेटेस्ट न्यूज, उनमें सोशल इश्यूज, तो उनकी भी मेरे को हल्की जानकारी होना जरूरी है. उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है सबसे इंपॉर्टेंट, बारिंग डैफ के अलावा जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपके करंट अफेयर्स का नॉलेज. तो करंट अफेयर्स का आपको नॉलेज होना, सिर्फ नॉलेज, आपको सुपरफिशियल नॉलेज नहीं होना चाहिए, आपको डीप इन डेप्थ एनालिसिस पता होना चाहिए कि अगर कोई इशू न्यूज में चल रहा है तो उसका मेन रीजन क्या है, भारत एज अ कंट्री, इंडिया एज अ कंट्री, उसके लिए क्या इसके रेपरकशंस हैं, हमारी इसके बारे में क्या ऑफिशियल पोजीशन है, और हमारा क्या सोच होना चाहिए. तो ये चीज जब आप सवाल अपने आप को पूछेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको वो इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होना शुरू हो जाएगा कि ये चीजें हैं जो मुझे रिक्वायर्ड है. और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं बच्चों को बताना चाहूंगा, वो सिर्फ इंटरव्यू के लिए नहीं, किसी और भी चीज के लिए, जब आप पढ़ाई भी करते हैं या इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपने आप को एग्जामिनर की या इंटरव्यू की अगर हम बात करें तो अपने आप को इंटरव्यूअर की पोजीशन में रख के देखें. क्योंकि इंटरव्यूअर की पोजीशन में अगर आप रख के देखेंगे तो आपको ये आप विजुअलाइज कर पाएंगे कि मैं अगर इंटरव्यूअर की जगह होऊंगा तो मैं अपने आप को क्या क्या सवाल पूछूंगा. तो वो अगर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, वो अगर बैठ के आप
पेपर पेन लेके वो चीजें आप जॉट डाउन कर लेते हैं कि ये सवाल है अपने डैफ के अनुसार जो मेरे को पूछे जा सकते हैं, तो आपको नॉलेज वाइज कोई कमी नहीं रहेगी। उसके बाद एक क्योंकि इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट ज्यादा है, इट इज नॉट अ टेस्ट ऑफ योर नॉलेज, क्योंकि नॉलेज आपकी मेंस में अच्छे तरीके से ऑलरेडी चेक करी जा चुकी होती है। तो इसमें आपको पर्सनालिटी को भी शो करना है। हाउ डू यू डू दैट? यू ड्रेस प्रॉपरली। इसमें ड्रेस का ज्यादा रोल नहीं है, बट फिर भी आपको कोई यह है कि आपको सोबर कलर्स पहनने हैं, वेरी फॉर्मल सूट्स पहनने हैं, तो विच आर दी गाइडलाइंस ऑल्सो। Other than that, the most important part of the interview, which I am covering at the last, is the way you communicate. Communication skills सबसे important है। Knowledge तब तक फायदेमंद नहीं है जब तक आप knowledge को अपने words में effectively और clearly communicate नहीं कर पाएंगे। तो सबसे important skill personality test के लिए आता है कि आपके communication skills आपने कितने अच्छे होन करे हैं। तो communication skills is not a one day job or a 15-day affair. It is a long process. It takes time, it takes effort, it takes a conscious effort, and it takes some time also. So उसके लिए आपको क्या करना है? आपको जरूरी नहीं है कि आपको फराटेदार अंग्रेजी ही आनी चाहिए। यूपीएससी के इंटरव्यू में आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप हिंदी भी चूज कर सकते हैं, आप अंग्रेजी भी चूज कर सकते हैं, तो उसमें कोई दुविधा की बात नहीं है। आपको जरूरी नहीं है कि आपको शशि थरूर जैसी की अंग्रेजी ही बोलनी है, बट आपको जो भी आप बोले, आपका एम होना चाहिए कि क्लियरली आप सामने वाले जो आपका इंटरव्यू बोर्ड है उसको आप बिल्कुल सरल शब्दों में, विदाउट एनी हेजिटेशन और पूरे कॉन्फिडेंटली आप अपने जो विचार है उस पर्टिकुलर इशू के बारे में उनको बता पाए। तो वो चीज है जो आपको मॉक इंटरव्यू के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली सर, कम्युनिकेशन स्किल्स, यही क्वेश्चन एसएसबी जो एस्पिरेंट्स उन्होंने भी पूछा था कि हमारी इंग्लिश जो है वो स्पष्ट नहीं है, हम नहीं बोल पाते हैं इंग्लिश में। सो इज दैट द वीक पॉइंट? हमें उस पे इम्प्रूव करना चाहिए, तब हमारा सिलेक्शन होगा। मतलब ऐसे भी क्वेश्चंस थे कि हमारी इंग्लिश हमारी अच्छी नहीं है, तो व्हाट शुड वी डू फॉर दैट? तो सर उनके लिए कोई एडवाइस? जी, इंग्लिश अच्छा होना मिलिट्री के लिए, अगर एसएसबी के लिए बात करें तो हल्का रिक्वायरमेंट मैं बोल सकता हूँ। यूपीएससी के लिए इतना ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, बट इंग्लिश अच्छी होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए चीज है वो है कि जो आपका कॉन्फिडेंस है कि जो आप कहना चाहते हैं वो कितना इफेक्टिवली कह पा रहे हैं। इंग्लिश अच्छी होने का ये मतलब नहीं है कि आप कोई हाई फाई वर्ड्स यूज करें, जो बड़े ही अच्छे इंग्लिश वाले जो डिक्शनरी वाले वर्ड्स वो नहीं यूज करने। आप जो नॉर्मल इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में आप यूज करते हैं तो वो भी यूज करके आप इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं। बट शर्त ये है कि जो भी आप कह रहे हैं वो आपको पूरे कॉन्फिडेंस से, पूरे, क्योंकि क्या होता है कि जब आप किसी से बात करते हैं तो आप इमेजिन करके देखिए कि जैसे अभी हम इंटरव्यू कर रहे हैं, तो यदि मैं बिल्कुल ही धीमी आवाज में बोलूं जो आपको समझ ही ना आए, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको समझ ही ना आए, तो फिर वो व्यूअर्स को ही अच्छा नहीं लगेगा। तो वही चीज दिमाग में रखनी है कि इम्पैक्ट कैसे क्रिएट होता है कि बिना, जो आपका इंटरव्यूअर है उसको खुद एफर्ट लगाए बिना जो उसने सवाल पूछा है उसका जवाब क्लियरली मिल जाए, सरल शब्दों में एंड इन अ वेरी कॉन्फिडेंट वे। उसमें जरूरी नहीं है कि आपको फराटेदार अंग्रेजी बोलनी है, बट आप तोड़ फोड़ के अंग्रेजी आप बोलिए, बट कॉन्फिडेंटली बोलिए। बट यस, अगर आप इंप्रूव करने का वक्त है आपके पास तो आप जरूर इंप्रूव करें, और जरूर इंप्रूव करने का एक ही माध्यम है, वो है प्रैक्टिस। खासकर जो मिलिट्री एस्पिरेंट्स हैं, मिलिट्री एस्पिरेंट्स क्योंकि थोड़ा फिजिकल फिटनेस के साथ जुड़े रहते हैं, तो उनको मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं। जैसे फिजिकल फिटनेस के लिए सपोज आपको कोई स्टैंडर्ड्स मीट करने हैं, रनिंग करनी है आपको, सपोज आधे घंटे में आपको 5 किलोमीटर का टारगेट है कि आप 6 महीने में आपने तैयारी करनी है कि आपको 30 मिनट के वक्त से पहले पहले आपको 5 किलोमीटर कवर करने हैं। तो हो सकता है जब आप पहले दिन प्रैक्टिस करेंगे तो पहले दिन प्रैक्टिस करने के बाद आप, हो सकता है 5 किलोमीटर को आपको 1-1.5 घंटा भी लगे। तो उसका क्या, उसको इंप्रूव करने का क्या तरीका है? आप रोज दौड़ेंगे, रोज प्रैक्टिस करेंगे, आप अपनी डाइट अच्छी रखेंगे और अपना रोज प्रैक्टिस करेंगे, रोज रनिंग करेंगे, किसी दिन कम करेंगे, ज्यादा करेंगे, बट एवरी डे यू विल डू इट। सो सिमिलर थिंग अप्लाइज टू द कम्युनिकेशन स्किल्स आल्सो। अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने हैं, आप उसको रोज 15-20 मिनट्स, हाफ एन आवर निकाल के अच्छे से प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने का ये मतलब है कि जैसे न्यूज रीडर्स न्यूज पढ़ते हैं, तो उस तरीके से कोई भी आप जैसे नॉर्मल अपना स्टडी भी कर रहे हैं तो उसको 15-20 मिनट्स के लिए वही पोर्शन आप लाउडली रीड करिए, सो दैट वो फ्लो ऑटोमेटिकली आता जाएगा। तो जब फ्लो आता जाएगा तो ऑब्वियसली आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो ज्यादा दिक्कत आती है, कई बच्चे क्या करते हैं, खासकर जो छोटी क्लासेस के बच्चे हैं,
वो कोई मुश्किल वर्ड आता है तो उसको स्किप कर जाते हैं। तो Yes. वो मेंटालिटी नहीं रखनी है। मुश्किल वर्ड या फॉर दैट मैटर लाइफ में कोई भी चैलेंजेस आते हैं, मुश्किलें आती हैं, तो उसको हेड ऑन, उसको टैकल करना है। तो हाउ डू वी डू इट? आप आज की टेक्नोलॉजी के जमाने में सारी चीजें अवेलेबल हैं, तो आप उस वर्ड को गूगल करिए, उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आपको 2 सेकंड में मिलेगा। 3-4 बार उसको उसको अच्छे से उसको कहिए और धीरे धीरे वो आपके सिस्टम का पार्ट बन जाएगा। तो आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कोई मुश्किल वर्ड आपके लिए रहेगा ही नहीं। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस है। सारे वर्ड्स तो हमें नहीं आ सकते हैं, बट यस, जो वर्ड आप पढ़ते हैं उसको स्किप मत करिए, उसको प्रैक्टिस करिए और उसको उपयोग में शामिल करिए। तो वो धीरे धीरे आपको एक अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंट स्पीकर बनाएगा। और एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए, आपको एक जज्बा पैदा करना पड़ेगा। किसी भी प्रोसेस में अगर आपको बेहतर बनना है तो आपको सबसे पहली चीज जो है, आपको अपने आप को वो जज्बा लाना है, पैशन लाना है कि आई वांट टू इंप्रूव दिस पर्टिकुलर स्किल ऑफ माइंड। ये पर्टिकुलर स्किल है जो मुझे इंप्रूव करना है, क्योंकि ये स्किल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरा एम है कि मैं एक अच्छा स्पीकर बनूं। तो वंस यू हैव दैट एम, यू आर पैशनेट अबाउट इट, तो कोई रीजन नहीं है कि आपको कोई रोक पाएगा एक अच्छा स्पीकर बनने से। Yes, definitely, sir. Am I audible? Yes, you're audible. Please go ahead. Okay. Yeah. So somebody has asked in the comments how to handle the pressure in the examination hall. और यही क्वेश्चन मुझसे इनबॉक्स में भी काफी लोगों ने पूछा था कि हम प्रेशराइज हो जाते हैं, we cannot handle this pressure, it's so difficult for us to handle the pressure of the examinations. तो हम प्रिपेयर करें या ये प्रेशर, मतलब what should we do to handle this pressure? Is there any specific exercise or meditation or what should we do to handle this pressure? क्योंकि एग्जाम में जाते ही हम नर्वस हो जाते हैं। सो ये भी एक प्रॉब्लम है जो एस्पिरेंट्स हैं या जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ। सो व्हाट इज योर सजेशन, योर एडवाइस टू देम? सो इट्स अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन कि प्रेशर को कैसे हैंडल करना है। प्रेशर को हैंडल करने का सबसे अच्छा तरीका है कि प्रेशर को आने नहीं देना है। तो वो प्रेशर कैसे नहीं आएगा, सारी लड़ाई उस चीज की है। प्रेशर कब आता है? जब हम सपोज हमने कोई टारगेट सेट करा है अपने लिए, तो जब हम उस टारगेट का जो डेडलाइन है, सपोज हमने एक पर्टिकुलर डे का, सपोज 31 जैन का हमने कोई टारगेट डेडलाइन रखा है कि 31 जैन तक हमें इतना सिलेबस हमें कवर करना है। तो जब वो 31 जैन के पास वाला समय आता है तो धीरे धीरे क्या होता है कि अगर हमने टारगेट से काफी पीछे हैं तो वो एंजाइटी बिल्डअप होना शुरू होती है कि मैंने जो टारगेट बनाए थे वो नहीं मीट अप हुए हैं। तो वो धीरे धीरे प्रेशर तभी बनता है जब हम प्रोसेस पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं और हम अपने प्रोसेस से हटके रिजल्ट्स पे या तो ध्यान रखते हैं या फिर कोई ऐसी चीजों पे ध्यान देना शुरू कर देते हैं जो प्रोसेस से रिलेटेड नहीं है। तो प्रेशर से जूझने का या प्रेशर्स को हैंडल करने का एक सबसे आसान तरीका है, अपने लिए छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए। अपने लिए डेली बेसिस या फिर वीकली बेसिस के टारगेट आप बनाइए कि अगले 7 दिन में मुझे इतना सिलेबस कवर करना है। सपोज आपने एक डेडलाइन बना दिया कि अगले 7 दिन में इतना सिलेबस कवर करना है। तो एक होता है मिड कोर्स करेक्शन। तो मिड कोर्स करेक्शन में क्या है, जैसे 3 दिन हुए हैं या 3.5-4 दिन हो गए, तो आपको आइडिया रहेगा कि आपके कितना पोर्शन बचा है, 50% बचा है, 20% बचा है, कितना बचा है। तो यदि वो मिड कोर्स में यानी कि हाफ वे मार्क पे आके आपका आधे से ज्यादा या फिर फॉर दैट मैटर अगर किसी रीजन से सिर्फ 20% ही हो पाया तो यू नो कि कोई रीजन रहे होंगे या फिर आई हैव फॉल्टर्ड ऑन दिस पार्ट फॉर 3 days। तो उस चीज को अगले 3 दिन या अगले 4 दिन के लिए आपको अपने आप को थोड़ा वेकअप करना है एंड यू विल हैव टू मेक एन एक्स्ट्रा पुश कि अगले 3 दिन में थोड़ा 3 दिन में नहीं सोचना, पहले नेक्स्ट डे का सोचना है कि मुझे नेक्स्ट डे थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना है। कि अगर आप रोज के 6 घंटे पढ़ते हो तो कुछ दिन आप 10 घंटे पढ़ोगे सो दैट जो पीछे का थोड़ा बैकलॉग है उसको मैं क्लियर करूंगा। तो इससे क्या होगा कि जो छोटे छोटे टारगेट्स अगर आप अचीव करने में कामयाब हो जाएंगे, अगर डेली बेसिस पे एक काफी फेमस कहावत है कि अगर आप जीतना चाहते हो तो ये मत सोचिए कि मुझे 4 साल के बाद जीतना है। आपका फोकस होना चाहिए कि जो आने वाला पल है, आने वाला जो आधा घंटा है, आने वाला जो 1 घंटा है, मुझे उसको जीतना है। तो यदि आप वो छोटे छोटे मोमेंट्स को या छोटे छोटे टाइम पीरियड्स को जीतने में कामयाब हो जाएंगे तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि लड़ाई लंबी नहीं होगी। लड़ाई लंबी कम होती है जब हम जो लॉन्गर टाइम पीरियड पे ज्यादा फोकस करते हैं और उसके चक्कर में हम जो माइन्यूट डिटेल्स हैं, जो छोटे छोटे पीरियड्स हैं, उस पे वी फॉल्टर। सो दैट इज द बिगेस्ट आयरनी। तो ओनली मतलब माय एडवाइस इज कि जस्ट फोकस ऑन द प्रोसेस फर्स्ट ऑफ ऑल
और प्रोसेस में भी छोटे छोटे टारगेट्स बना के जस्ट ट्राई टू अचीव देम। तो इसमें एक साइकोलॉजिकल बूस्टर भी होता है कि यदि आपने डेली बेसिस पे टारगेट्स बनाए हैं तो डेली बेसिस पे आप अचीव भी कर पा रहे हैं, और अगर आप किसी पर्टिकुलर दिन में अपने आप को थोड़ा वो और बूस्ट अप देना चाहते हैं, तो अगर आपने 6 घंटे का टारगेट बनाया था और जो टोटल ओवरऑल सिलेबस का टारगेट बनाया था उसको ओवरशूट कर देना, कि जितना था उससे ज्यादा कर देना। तो ज्यादा कर दोगे तो वो एक आपको अंदर से खुशी आएगी कि मैंने मेहनत करी है और जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा मेहनत करी है। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं जिससे हम प्रेशर को हैंडल किया जा सकता है। डेफिनेटली। तो दैट मीन्स सेट योर टारगेट्स एंड अचीव देम। छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ और उन्हें अचीव करो। दैट्स हाउ यू विल बी एबल टू हैंडल द प्रेशर। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सर, आपकी स्ट्रेंथ क्या है? व्हाट इज योर स्ट्रेंथ? लेट्स कम टू यू नाउ। व्हाट इज योर स्ट्रेंथ? माय strength, I would say, is the thought process which says never give up. A thought process which says that nothing in this life is difficult. And a thought process which says that the human mind, the human soul is insurmountable. कुछ भी हो जाएगा जीवन में, वो इंसान के जज्बे से, इंसान के करेज से बड़ा नहीं है। तो चैलेंज आ सकते हैं और चैलेंज आएंगे। लाइफ इज अबाउट चैलेंजेस, और लाइफ में स्ट्रगल करना जरूरी भी है, क्योंकि जैसे वो बोलते हैं कि हीरा, जब तक हीरे को प्रेशर, जो कार्बन है, हीरा इज व्हाट, हीरा इज जस्ट अ डायमंड इज जस्ट अ कार्बन। कार्बन को जब तक, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेफाइट एंड डायमंड? उनका केमिकल कंपोजिशन सेम है, बट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि जो डायमंड है दैट अंडरगोज हायर प्रेशर एंड हायर टेम्परेचर, वो ज्यादा ऐसी एडवर्स सिचुएशंस को फेस करता है जिसके कारण वो डायमंड बन पाता है। तो इफ यू हैव टू बिकम अ डायमंड, यू शुड बी वेरी हैप्पीली विलिंग टू मेक श्योर दैट यू आर सफरिंग विद हैप्पीनेस, क्योंकि सफरिंग को यू कैनॉट अवॉइड। द ग्रेट लॉर्ड बुद्धा सेज कि सफरिंग इज द मोस्ट द फंडामेंटल ट्रूथ ऑफ लाइफ। सफरिंग एंड स्ट्रगल आनी ही आनी है, कुछ भी हो जाए, बट हम स्ट्रगल पे फोकस नहीं करेंगे। स्ट्रगल आएगी तो बी happy that you are struggling, because if you are struggling, then of course you are in the process of getting better. So that is the thought process that I think I would like to share, that I also believe in, and I would like the youngsters of this great country also to believe in. And so according to you, who do you think built the nation? What are the 3 important things that build a nation according to you? The first of all, I think most importantly, without a doubt, anything, without an iota of doubt, it is the parents. It is the parents, because before we start with the schooling, and in fact, even after we start with the schooling, schools are just about 6 to 7 hours of your 24 hours. Yes. The rest of the 16 to 17 hours are directly or indirectly, you are associated with your parents. And the first lesson that any child that learns is directly from the behavior of their parents. How it is not just what their parents tell them to do, but it is what they see their parents doing. Suppose if there are parents who are very honest in their conduct, who are very forthright about their duties, so a child sees that, because it is said that it is not the words that mean anything, it is the actions that speak louder than the words. So the first and the most important thing for the country to develop, or the pillars on which the country stands, is how good the society as a whole treats its. The parents is not just the mother and father, it is the society as a whole. So first and the most important pillar is the social structure. The second thing within that is the teachers. We do not give them the due weightage, we do not give them the due credit that they deserve, but a teacher or the entire teaching community is the most important thing that this country needs. It is actually unfortunate that the teaching profession is not seen as something which is very lucrative, or something which has a huge role to play when it comes to nation building. So the second most important thing is the quality of teachers that we have. There are some very good teachers who have given their lives dedicated to building up that community of warriors and young people. So that needs to be appreciated also, and teachers need to be trained also, and teaching as a profession needs to be made more lucrative also. Lucrative, I mean, because at the end of the day, the motivation
factor will fall down if you are contributing, but you are not being paid adequately. Because at the end of the day, you have to run your family, you have to run the house. So that is the second thing that I think is most important. And third thing, which undoubtedly is directly a product of the first two factors, is the young people of this great country. Because as we all know that next 25 to 30 years, we are having the stage of demographic dividend, in which we have more than 50% of the people who are young. So this is huge time for this country, for all of us to understand our responsibility. The youngsters have to understand that this social media and all those things, the frenzy that is going on, it is fine, but we need to make sure that next 25 to 30 years we are able to do certain actions for which our subsequent generations, our children and grandchildren will thank us. Because today, if we see, we are grateful to the generations that have been before us, because they were the freedom fighters. Yes. And after the freedom, they were building the nation right from the scratch. So those two generations after the independence and many generations before the independence, they have given us that feeling of pride and being very happy about something. The point is, are we willing to give the same thing to our children or grandchildren? So the youngsters is, I think, not just the people who are till 30 years of age. It is anyone from 10 years of age to 60 years of age. All these are young people, because directly, indirectly, they are contributing to the development of the country. And those who are beyond 60, they have already done their part. So this age group of maybe 15 to 50, 55 or 60, that is the third most important pillar that this country would need. And I think the youngsters have to understand that it is their responsibility that they take the country forward from here. Today is Republic Day, and no better day to actually understand the ethos of the Constitution, the preamble in which we call about equality. All of us are, first of all, Indians, and any other identity that we have is subsequent identity. If you think that you are something first and then an Indian, then I'm sorry to say that your fundamentals are flawed, because there is a Chetwood credo that we will learn in the military. It teaches us three things. The first thing it says that your country stands first always and every time. So you have to think about your country first and the foremost. The second thing that you need to worry about is the comfort of your subordinates, the men you are commanding, all your juniors. That is the second thing. And the third thing and the final thing is your own comfort. It will always be the last thing. If we can, on this Republic Day, if we can actually imbibe the spirit in ourselves, irrespective of whatever the profession we are in, irrespective of whatever we are working. You may be a teacher, you may be a soldier, you may be an entrepreneur, you may be a businessman, you may be anything, you may be an artist. But if you have the thought process that this is the priority one, is always going to be the country. My identity is Indian first, and subsequent identities will always be the last. So I think these three pillars, and most importantly, because these are three interlinked pillars. First, the parents and society as a whole, then the teachers, and subsequently all of us combined as a workforce. Then I find no reason that by 2047, not just we will be a developed country, but we will be the #1 country in this world. Definitely, sir. Thank you so much for इतनी महत्वपूर्ण सजेशन के लिए सर. ये मैंने भी नोट किया. And now I know आप यूपीएससी में कैसे सिलेक्ट हुए सेकेंड टाइम में. तो सर, आपका एक लास्ट आपसे क्वेश्चन है कि रिपब्लिक डे पर आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन टू यू सर. फर्स्ट ऑफ ऑल, very happy Republic Day to all of us. I will not say all of you, it is all of us, because all of us have that color of the tricolor within our blood. So first of all, many congratulations on 75th Republic Day. And second thing, which I already covered, कि हमें अपनी जिम्मेदारी को समझना है. All the young people or every citizen of this country, अगर हम individual level पे अपना responsibility समझ के जो required है from the profession we are in, उसको हम बेस्ट तरीके से कर देते हैं, then I'm sure there is nothing else that would be required to be done.
अपने आप को अगर आप भारतीय पहले मानते हैं और बाकी अपनी आइडेंटिटीज को पीछे रख देते हैं, Exactly. और उसके बाद जिस भी प्रोफेशन में आप हैं उसको पूरा मेहनत से ट्राई टू बी द बेस्ट इन दैट. जैसे आई थिंक वन ऑफ द लीडर्स ऑफ फ्रीडम मूवमेंट, उन्होंने कहा था कि इट मे बी योर वर्क टू क्लीन अ स्ट्रीट, यू मे बी अ स्वीपर, but if you it is your duty to make sure that your street is the cleanest one in the world. So वही thought process से हमें आगे बढ़ना है कि जिस भी काम में हम लगे हैं उस काम में हमें सर्वोपरि बनना है, हमें बेस्ट बनना है. Once we do that, then I think the country and the youngsters or the children and grandchildren of ours will be grateful to us. थैंक यू सो मच मेजर सिंह. आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ जाना. एंड आई थिंक जो क्वेश्चंस मुझसे बहुत लोगों ने पूछे थे उनका आंसर आपने दिया है. सर आप प्लीज इसे आप शेयर कीजिएगा एंड मुझे ऐड कीजिएगा उसमें, सो दैट जो एडेड है मेरे जो फॉलोवर्स हैं उन्हें पता चले, क्योंकि बहुत सारे मे बी आप काइंडली उसे शेयर कीजिएगा. सो विद दिस आई एंड दिस सेशन. सर थैंक यू सो मच. I'm so honored कि आप आए. Pleasure, ma'am. Thank you so much, ma'am. It was a mutual pleasure. Looking forward to more such sessions in future, ma'am. Thank you so much. Definitely. Thank you so much. Take care. Okay. And happy Republic Day to all of us. Once again, Jai Hind. Thank you. Jai Hind.